Welcome back to our live session. My name is Rashmi, and today I'm with University of Paige, Hungary. Miss Sakshi Arora is here with us. Sakshi, how are you? I am very well, thank you, Rashmi, and thank you for giving me an opportunity to share your platform and to put facts and details about University of Pecs or to bring University of Pecs on platform with our audience. Thank you so much, Sakshi, for the words. Before we start, Sakshi, can you give us a brief introduction about University of Paige and Hungary? Talking about University of Pecs. University of Pecs is located at Hungary, and Hungary is basically a Schengen country that is based out in Europe. Now, talking about Europe, as we all know that Europe is a pocket-friendly country that is which is a pathway to all the English countries, whether UK, Canada, Australia, or New Zealand. And as well as if you get a Hungarian visa, you are allowed to travel 26 Schengen countries with the same with the same visa stamping. Now, talking about University of Pecs, Hungary specifically, as requested by Rashmi ma'am to deliver a small briefing. See, talking about University of Pecs is a public university that is based out with Hungary that encourages students or that gives allows the student to enjoy the benefits of work permit, study permit, leisure activities, as well as visiting to 20 pathway to all the English countries and 26 Schengen countries. University of Pécs is a centrally located university in the hub of Hungary where the student can easily travel from one place to the another, enjoying all the daily benefits of life and even enjoying the good income rate. So, Hungary, if I talk about University of Pécs, it's a beautifully designed university that is located in Hungary. Hungary, as a government, does give you scholarship uh, to the international students, which is a great beneficial point for the students to enroll for. Right. And are what are the most recent upcoming sessions to apply to University of Page? What are the available programs? See the recent intake that we people are basically looking for. See, for September 2022 intake and Jan 23rd intake, we are looking for these are the two major intakes that we people are offering right now to these students. And there are 15, there are almost 10 plus courses or program of choice that the student can enjoy or get the assessment for their profiles at an economical cost. Okay. And also in the comment section, there is one question regarding the nursing program. Is there any program related to nursing or medical science? See, talking about the nursing program or the medical science, but of course, but of course, there are programs available. You can give your portfolio to us, and we can give you a valid options to the related program. Right. Also, Sakshi, what are the general requirements, the academic requirements, and the language proficiency, if there is any? See, talking about the eligibility criteria to University of Pegs, Hungary. See, University of Pegs has an eligibility criteria of 65% with ITLS bands that is 6.5 bands. See, we pick out the students talking specifically about eligibility criteria. If the student has a good academic score, then medium of instructions that is only required in English along with CV and motivation letter. यहाँ हम बच्चे को रश्मि मैम एंड टू माय व्यूअर्स एंड इवन ऑडियंस, यहाँ हम बच्चे को 57 58 59% वाले बच्चे को भी वी कैन पिक अप द स्टूडेंट्स, हम उठा सकते मतलब वी कैन एनरोल द स्टूडेंट्स for a bachelor streams for a bachelor streams whether the student is from the art stream or humanity stream से है बच्चे को bachelor stream बच्चे को मिल जाएगा। Right. ठीक है। बैचलर स्ट्रीम बच्चे को बिजनेस के कोर्सेज ऑफर हो जाएंगे। फॉर अ मास्टर स्ट्रीम के लिए अगर मैं बात करूं बच्चे के लिए, तो उसका रेलेवेंट कोर्स बैचलर स्ट्रीम से जरूर होना चाहिए। अ गुड न्यूज टू द स्टूडेंट्स, जो बच्चे इतने सालों से गैप की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं,
तो यहाँ पे बच्चे हम 6 to 7 years ऑफ गैप के बाद भी हम बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो बच्चे अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए. So this is a good news from University of Pecs and from Hungary. सो लाइक मैक्सिमम जो गैप एक्सेप्टेड है वो 6 to 7 years का है, अप टू 6 7 years. ओके, बिकॉज देयर Hmm. इज वन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन जिसने स्टूडेंट ने पूछा है कि कितना तक गैप इज एक्सेप्टेबल. सो इट्स अ गुड थिंग. एंड Just to add one thing in the point, sorry Rashmi to interrupt. नो वरीज. 6 to 7 years of gap is acceptable, but with proper gap justification letter. We want an experience letter from the student. Okay, right. So yeah, there should be a justification if there is a gap. Yeah. And also about the English waiver, can you clear it out specifically कि English में exactly किस तरीके से रहता है? अगर मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करूं रश्मि मैम एंड टू द पीपल आउट देयर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वी एक्सेप्ट आइल्स में 6.5 बैंड्स. यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज एक्सेप्टेड, आइल्स, एसए, यूरो एग्जाम एंड आइल्स इंडिकेटर, टोफल इज एक्सेप्टेड, बट पीटीओ डिलिंगो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो बच्चा यहाँ पे बच्चे को जो रिसेंट पास आउट बच्चा है 2021, 1920, 2021, ये बच्चे इजीली बिजनेस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं विच इज रेडली अवेलेबल. Okay. which is readily available with us. हमारे पास बिजनेस के कोर्सेज है जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस रीजनल एंटरप्राइज, हॉस्पिटैलिटी, बीएससी टूरिज्म मैनेजमेंट. सो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कोर्सेज है विच वी ऑफर बैक टू द स्टूडेंट. और जो बच्चा आगे चल के फ्यूचर ग्रोथ भी, प्लेसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जॉब भी बच्चे को वैलिड एमएनसी कॉर्पोरेट कंपनीज में मिलती है. So this is something very benefit point to University of Pecs, and as being a part of the university and a representative of university, ये मैं बच्चों को जरूर बताना चाहूंगी कि courses है available at a low economical tuition fees. How much is the tuition fees? See, talking specifically about the tuition fees, अगर मैं बच्चों के लिए बात करूं तो यहाँ पे ट्यूशन फीस बच्चे को 3,000 से 3,500 euros 6 months की फीस देकर हमारे साथ जानी है. जिससे साल की फीस, अगर इफ आई टॉक इट मोर डिटेल्ड डिस्कशन या फैक्ट्स में मैं अगर ट्यूशन फीस में बात करूं, साल की फीस बच्चे को 7 से 8,000 यूरो पे पड़ जाती है. नाउ आप हम स्टूडेंट्स इवन हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि मैम इंडियन करेंसी में कितनी पड़ती है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख के बीच में बच्चे की ट्यूशन फीस पड़ती है. और अप्रोक्सीमेटली 3, 3.25, 3.5 लाख में स्टूडेंट फ्लाइज टू हंगरी, so which is much more economical and pocket friendly to student to enjoy, जो बच्चा लो बजट वाली कंट्रीज को देख रहा है इस वक्त जाने के लिए. Right, so it's very affordable, and as per my understanding 2 to 3 lakh is for a semester, right? Sorry Is it for a semester? एक semester के लिए 2 to 3 lakh जितना है INR? मैम जैसे इट सी 3,000 to 3,500 यूरो जो रश्मि पड़ेगी, दैट्स अ 6 months, दैट इज अ सेमेस्टर, दैट इज अ 6 semester fees that the student is going to pay. Now rest of the tuition fees, in fact this is just an outline of the program starting tuition fees to talk about. Rest of the tuition fees would be given in detailed description by my head office and my admission team. Sandhya would be giving the things in hand once the student is fully enrolled out for the course and once we get the application confirmation from your end. Right. Okay. So ठीक है, ये तो ट्यूशन फीस का हो गया. What are the industry connections? अभी let's say if student is coming at University of Paige and so क्या opportunities उसको university provide कर रहा है वो particular In, region में? in terms of work, In terms of work, in terms of settlement. see, talking about the work permit and the permanent residency for University of Pegs. See, work permit बच्चे को 20 hours for bachelor's, 40 hours of master's allowed है, plus weekend पे बच्चा काम कर सकते हैं. अच्छा, one beautiful, one very great point and a good news to the students to know कि जब बच्चा बुदापेस्ट आता है through a flight, then it is just 2 to 2.5 hour distance away from the main university, that is University of Pegs. So Budapest is a place for leisure activities
and it also welcomes tourism over there. Now, if I talk about the work, coming back to the work category again, 20 hours for bachelor's, 40 hours for masters, I've already mentioned, तो weekend पे बच्चा काम कर सकता है, weekend पे बच्चा बुद्धा पेस्ट पे भी काम करने जा सकता है, और वहाँ अर्निंग रेट, वेजेस रेट भी अच्छे हैं in comparison to इंडिया. इफ आई कंपेयर इंडिया, तो वहाँ अगर हम यूरोप का रेट इस वक्त करेंसी रेट में कंपैरिजन पे डालूं, तो इस वक्त प्रेजेंटली व्हाट आई चेक्ड आउट लास्ट एंड अकॉर्डिंग टू माय गेसिंग इट इज 84, 85, 86 में लाइव कर रहा है. तो बच्चे का जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बच्चा, उतना टोटल रिकवर बैक करके अपने पेरेंट्स को दे रहा है हम लोगों को. सो इट्स Okay, अ so yeah, फ्रूटफुल. there are good chances for the ROI, return on investment पे. यस, वर्क परमिट के लिए बहुत अच्छे चांसेस है जहां बच्चा आराम से काम कर सकते हैं. अच्छा, देयर इज अ स्टे बैक ऑप्शन, परमानेंट रेसिडेंसी इज आल्सो अवेलेबल ओवर देयर इफ द स्टूडेंट हैज अ, इफ द स्टूडेंट गेट्स अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द कंपनी इन टर्म्स ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर. जैसे ही बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, वैसे उसकी वर्क परमिट के चांसेस बढ़ते जाते हैं, एंड इवन द staying back opportunity to Hungary also increases over there. That means the permanent residency also increases there. Right. But Awesome. officially, here the student gets an eligibility to work for 1.5 years, so that the student can build a fruitful, stable growth for his future career. Right. And Sakshi, just to add on, कि accommodations का accommodation का कैसे है, like how students are managing right now, अभी जो current COVID की भी situation है, कैसे student and country university deal कर रहा है पूरे situation के साथ. सी टॉकिंग अबाउट द अकोमोडेशन, कोविड वाली जो कोविड की सिचुएशन आई थी या कोविड की क्राइसिस आई थी पीछे, वी ऑल नो इट कि हंगरी, शेंगन कंट्रीज में इतना ज्यादा कोविड अफेक्ट नहीं हुआ था Right. एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा वगैरह में अफेक्ट हुआ था या इंडिया में अफेक्ट हुआ था. सो ऑल द इम्पोर्टेंट मेजर्स आर टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेक्स. सो बच्चा वहाँ फ्री ऑफ माइंड, और इस डर से बच्चा आराम से इस डर से निकल कर आराम से बच्चा जा सकता है कि उसको एक सेफ इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर, तो बच्चा आराम से जाके वहां पे रह सकते हैं. और अगर मैं अकोमोडेशन की वहां बात करूं, so the accommodation for a first year monthly students with all the basic utilities, it is available at 130 euro, with real estate agencies providing all the basic utilities, and private apartments are also available in support of accommodation, which is just near to the university and also reduces the traveling cost. पहला बच्चे को सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट पे बच्चे, व्हेन द स्टूडेंट गोज आउट, व्हेन द मेन एप्लीकेंट गोज आउट, बच्चे को सबसे ज्यादा होता है फिक्र कि मैडम मेरे वहां कितना खर्चा पानी पड़ना है, राइट. तो खर्चा पानी ऑलरेडी रिड्यूस अप कर रहा है वो इंडस्ट्री, क्योंकि वहां उसके आसपास सारी चीजें नियर बाय लोकेटेड है, with all the basic needs, accommodation, with work areas, and everything is located nearby. Right. But exactly कितना cost of living रहता है yearly student का यूरोप में? अगर मैं बच्चे का इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रश्मि, यू आर आस्किंग, और लिविंग? Living expenses. लिविंग, आई ऑलरेडी मेंशनड यू कि अकोमोडेशन, अगर बच्चा हॉस्टल 10 डोमेट्रीज वाला हॉस्टल लेता है, तो 130 यूरो के करीब बच्चे को पड़ेगा विद ऑल द बेसिक यूटिलिटीज, No, एंड not दैट just इज the नॉट मोर accommodation, अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट टू पे आउट. हाँ जी. not just the accommodation, the overall living expense for a year. वो कितना? अगर मैं बच्चे का टोटल लिविंग एक्सपेंस फॉर एन ईयर में बात करूं, इट इज वेरी इकोनॉमिकल. मतलब बच्चा आराम से अपना टोटल खर्चा पानी निकाल के एक अफोर्डेबल कॉस्ट, इकोनॉमिकल कॉस्ट पे बच्चा कैन बियर ऑल द कॉस्ट इन कंपैरिजन टू इंग्लिश कंट्रीज. दिस इज व्हाट आई कैन से. All right, awesome. Sakshi, are there any other points that you would like to add on? Yeah, one important point that I really want to add up to this detailed discussion, that there is a Skype interview that has to be entertained by the student. So there is a Skype interview that is 10 to 15 minutes of round and would be informed to the students 5 to 7 days before, and a week preparation time would be given. So बच्चों को Skype interview से इतना घबराने नहीं, because it's a general English proficiency test and an interaction round to an introduction
of the main applicant, जहां बच्चे से basic questions पूछे जाएंगे, university पूछेगी. Right. The support system would be provided by us and by the team also. So we would be drilling the student and allowing the student to prepare well, and so that the student gets a good visa success rate. तो वो इंश्योरिटी हम दे रहे हैं Skype interview की भी. Right, and also Brampton Immigration will also help you with the interview preparations. हमारे end से भी आपको full support रहेगा if you are applying to University of Page, and also Sakshi will wait for few minutes for the questions in the comment section, and after that we can wrap up the session. Okay. So, guys, please enter your queries and questions in the comment section, and we'll start picking those. There are already few, so we can start answering that. Okay, so again, yeah, I think we did answer this one, the PR program for nurses. Gap भी you did mention, like up to, so gap again मैं आपको बता देती हूँ कि up to 6 to 7 years is acceptable if there is a justification for a gap. So there is one person, Glampriya, is asking, is 5 band in one module is acceptable? Ma'am, I just want to know your full portfolio. On the basis of your full portfolio, we can provide you options only after the assessment. Just on an IELTS score of 5 bands, I cannot tell you anything. We need to check your last academic score of your last qualification as well. So Priya, you can reach out to Brampton Immigration and you can share your profile with us, and हम लोग directly ऐसा है तो आपको rep के साथ connect कर देंगे, साक्षी के साथ connect कर लेंगे. You can discuss your profile, आपको जो भी queries है आप individually कर सकते हैं बात. And then there is another question from Farhan. Kindly give the information about nursing. I think he's asking for the nursing program again. Farhan, thank you so much for reaching out us. Farhan, you can just drop your portfolio to Rashmi ma'am or to Brampton Immigration support executive. She will give you a call back, and we will get back to it after the assessment only. Yeah, options are available in terms of every kind of profile, but we need to see assessment part first. Awesome. I don't see any new comments in the comment section. So I think we can wrap up the session, Sakshi. Thank you so much for joining our session. Thank you, Rashmi ma'am, for allowing me an opportunity to use your platform in order to explore the facts about University of Pecs, and I would be just looking forward to see all the enrolled out students at University of Pecs. Let's flag high. Yes, exactly. And also, guys, if you want to see the recording, there would be a recording in the on our Facebook page, so you can rewatch the session. आप अपने सारे queries and doubts clear कर सकते हैं. And if you want to know more about the University of Page, you want to apply, then आप please Brampton Immigration को reach out करें, the nearest office, and we'll guide you with the application and everything. Thank you so much, and keep watching this space for the live sessions. Thank you, Sakshi. Thank you, everyone. Thank you, Rashmi, for allowing me to part my information for University of Pecs. Thank you, Rashmi. Thank you. Okay. Bye.